Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to do the new chapters worksheet, that is chapter 21, like father, like daughter. Okay, so we started so much of interesting things in this chapter, जिसमें हमने देखा कि how are some habits and way of talking, way of walking, way of singing match with our parents or our siblings, like our brothers and sisters, like our grandfathers, grandmother. इन सब से हमारी कोई ना कोई ऐसी हैबिट होती है या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जो मैच करती है विद देम. ओके, इट मे बी आर फीचर्स लाइक माई आईज लुक लाइक माई मदर और माई नोज लुक लाइक माई फादर, माई हेयर्स इज लाइक माई ग्रैंड मदर. सो इस तरह से हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े थे. Clear? But now what? Now we are going to do the worksheet of this chapter. Why worksheet? Because worksheet is very important. It revise our whole chapter. जो इतना सारा बड़ा चैप्टर हमने पढ़ा था उसे वर्कशीट कुछ एक्सरसाइजेस के साथ पूरा रिवाइज करा देती है, राइट? जो पढ़ा था सब कुछ याद आ जाता है कि हाँ हमने ये पढ़ा था चैप्टर में. तो वैसे ही हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इस की वर्कशीट के साथ जिसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस हैं. Clear to you? Okay, so let's start with our very first exercise, that is filling the blanks. So what we are going to do in the filling the blanks, we just read the sentence and try to find out कि इस blank space में क्या आएगा, right? Okay. So what I want from you, जैसा मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि I want from you कि आप लोग पॉज करें और प्लीज़ ट्राई करिए कि ये आपसे खुद से बन जाए. ओके, नहीं बना कोई बात नहीं, बट इट्स लेट्स गिव अ ट्राई. ओके, ट्राई देने में क्या प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होती. So I just want कि you have to pause here and try to find out the words to fill in the blanks, and then you can play it and try to find out what you have done is matching with my answer or not. Okay, कोई mistake भी हुई तो mistake से we always learn with mistakes. Okay, so let's start with the very first filling the blanks, that is dash is a Sameer's मौसी. समीर की मौसी का नाम क्या था? Who is Sameer? Sameer is a baby, right? So Sameer's मौसी is Nilima. Nilima is Sameer's मौसी. Okay, so who is Sameer's मौसी? Nilima is a Sameer's मौसी. Okay. Okay, next, in Chachi's house everyone is very fond of. Fond of means बहुत ज़्यादा पसंद होना. So in Chachi's house everyone is fond of what thing? Everybody is fond of listening music. So everybody is fond of music, listening music, or even in singing music. Okay, so everybody is fond of music. M-U-S-I-C. Okay. Okay. सुहासिनी father is a dash coach. सुहासिनी के father किस sport के coach थे? Which sport? Yes, karate coach थे वो. Okay, so he is a karate coach. Clear? Dash knows 2 languages. So Suhasini and Saroj both are twins. Yes. Okay, so Suhasini know, their mama were very confused कि who is Suhasini, who is Saroj. So कैसे identify करते थे between both of them? Suhasini knows how to play cricket. वही one of the girl other knows how to talk in 2 languages. So other girl name is, yes, other girl name is Saroj. Okay. Okay. Next, it is necessary that if any one of the parents has polio, their dash will also have it. So it is not necessary that if any of the parent has polio, it is, ये बिल्कुल भी necessary नहीं है कि अगर किसी भी person को polio है तो उनके किसको, children को भी polio हो, ये ज़रूरी नहीं है. So their children will also have it. So यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा children. Okay. So उनके children को भी हो, ये important नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है. Clear? Next, Vibha's grandfather dash loudly and dash difficulty. With difficulty. Okay. So जो विभा के grandfather थे वो क्या करते थे? He talks loudly. Okay. So he talks loudly and here with difficulty. So he talks loudly. बहुत ज़ोर से बात करते थे और सुनने में उनको प्रॉब्लम थी. That's why वो ज़ोर से बात करते थे. जिन्हें hearing प्रॉब्लम होती है उन्हें ऐसा लगता है कि we are talking very slowly. बट ऐसा नहीं होता, हमारे ईयर्स ओके हैं, सो हमें पता चल जाता है कि नहीं, दे आर टॉकिंग वेरी लाउडली. सो लाइक दैट ओनली Vibha's grandfather talks loudly and here with difficulty.
Okay, so we are done with the filling the blanks. In first filling the blanks, Nilima is a Sameer's Mausi. Clear? In Chachi's house, everyone is fond of music. Clear? Suhasini's father is a karate coach. Clear? Saroj knows 2 languages. Next, it is necessary that if any of the parents, it is not necessary that if any of the parent has polio, their children will also have it. Next, Vibha's grandfather talks loudly and hear with difficulty. Clear? So we are done with the filling the blanks. I hope you also done with this. Okay, now we will move ahead. Next is T for true and F for false. So what we have to do here, just read the sentence and find out कि sentence सही है कि गलत है. If the sentence is correct, we have to write T for true. If the sentence is wrong, we have to write F for false. सही है तो true लिखना है, गलत है तो false लिखना है. Clear? Okay. So Ashima sneezes just like her father does. So yes, Ashima जो थी बिल्कुल similarly आज ही sneeze करती थी just like her father. So this sentence is very much correct. Okay. Next, Nilima had gone to her chachi's place in the vacation. जो नीलिमा थी वो अपने चाची के घर गई थी in the vacation. चाची के घर की नानी के घर गई थी. Yes, नानी के घर गई थी, not चाची के घर. So this sentence is wrong. So we will write F for false. Next, Nilima's hair is curly like her mother's. जो नीलिमा के hairs थे वो बहुत curly थे, like her mother's hair. Like her mother or not? She had a curly hair or what? No, she had a curly hair but like her sister. Okay, so not like her mother, like her sister. This is again a wrong statement. We will write F for false. Clear? Saroj and Suhasini are twins. Yes, both the sisters are twins. Very correct. We will write T for true. Next, morning begins with music in Chachi's house. Again a very correct statement कि हाँ चाची के house में everyone are very fond of music. सबको music बहुत पसंद था तो उनकी जो mornings थी वो begin ही होती थी with the music. Clear? So this sentence is again right. We will write T for true. Next, Sati's one leg was affected by polio. Yes, Sati जो थी उनका जो एक leg था वो affected था by which disease called polio. Okay, so this is also a right sentence. We will write T for true. Okay, so we are done with this true and false. I hope you are also done with this. Okay, now we will move ahead with the next exercise. Next exercise is answer the following question. In answer the following question, we are going to do each and every question. We will read it and discuss it. Clear? Okay. So first question is Ashima sneezes like her father. What could be the reason behind it? जो आशिमा थी वो कैसे sneeze करती थी? Just like her father. Just like her father. But why? क्या reason था उसका? It is because of heredity. So it is because of heredity कि heredity में हमारे parents की कुछ habits जो होती हैं वो हमारे अंदर automatically आ जाती हैं. ऐसा नहीं होता है कि हमारे अंदर वो क्यों है? Because of our parents. So it is called like heredity. We are the daughter, we are the son of our parents, right? So उनकी कुछ habits हमारे अंदर automatically आ जाती हैं. Why? Because of heredity. That's why Ashima sneezes just like her father. Okay, so answer is because of heredity. Clear? Next question. Next question is where had Lilima gone in the holidays? So Lilima कहाँ गई थी? Lilima went to her nani's place. अपनी नानी के घर गई थी in the holiday. Simple. Yes, Lilima went to her nani's place. Clear? Okay. Now next question. Next question is how is Lilima related to Sameer? नीलिमा समीर से कैसे रिलेट करी थी? कौन थी वो समीर की? नीलिमा समीर की मासी थी. ओके, सो नीलिमा इज समीर्स मौसी. ओके, सो नीलिमा इज समीर्स मौसी. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, what do you mean by twins? What is the meaning of twins? Twins are both person who exactly look like each other like this. So twins कौन होते हैं? जो exactly एक दूसरे की तरह दिखते हैं and born on the same date. और वो एक ही दिन पे born होते हैं having the same age. Age same होती है. If she is 10 years old, then she is also 10 years old. Okay.
if her birthday come on 4th June, her birthday is also come on 4th June. Okay, so both were twins. Okay, and both were look like each other. Okay, so that means both were twins. अगर ये 3 things आपकी match हो गई, यानी 2 लोग twins हैं. Birth on the same date, age is also same, and yes, birth by the same mother. दोनों की mother कौन होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए. Okay, and exactly look like same each other. So 2 persons who exactly look like each other and born at the same date by the same mother. You can add by the same mother. Okay, born at the same date by the same mother. You can add this on your answer. That means twins. Twins who exactly look like each other, born at the same date by the same mother. Clear? Okay. Now we will move to the next question. Next question is, do children inherit all the disease from their parents? क्या सारे diseases मिलती हैं parents से? No. ओके, हेरिडिटी डज नॉट कंसिस्ट कि आपको सारी डिसीजेस कन्वर्ट हो जाएंगी, आपकी सारी डिसीज ट्रांसफर हो जाएंगी टू योर चिल्ड्रन, ऐसा कुछ नहीं होता है. सो नो, चिल्ड्रन डज नॉट इनहेरिटेड ऑल द डिसीज फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ऐसा नहीं होगा कि सारे डिसीजेस हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं. क्लियर? ओके. Next, how do mornings begin in Chachi's house? We all know Chachi's house. In Chachi's house, everyone is very fond of music. So, उनकी जो morning थी वो किससे begin होती थी? With the music only. So, morning begin in Chachi's house is with music. Clear? Okay. Next, so why do Saroja and Suhasini look alike? वो एक दूसरे की तरह क्यों दिखती थी? Because both were twins. Because both were twins. Because both were twins, that's why वो एक दूसरे की तरह दिखती थी. Because both were twins. Okay. Next, whose leg was affected by polio? किसका leg affected था polio से? Sati's leg. किसका leg affected था? Sati's leg was affected by the polio. polio में क्या होता है? जो leg है वो आपका work properly नहीं करता है. Okay. Not work properly. So that would happen when you are affected by the polio. So जो leg होता है वो काम नहीं करता. Maybe one leg, maybe both the legs, कुछ भी हो सकता है. Okay. So Sati's leg was affected by the polio. Next, which part of a body is affected by polio? कौन सा part हमारी body का affected हुआ था? अभी हमने पढ़ा कौन सा part होता है? Yes, जो हमारे body का leg होता है वो affected होता है in case of polio. So leg was affected by the polio. Clear? Okay. Next, explain the terms. So some of the terms are given here. I am going to explain you in just one line. So heredity which comes from our parents, which transfer from parent to children. Heredity एक ऐसी चीज है जो transfer होती है from the parents to their children. Clear? What is polio? Polio is a disease in which leg is affected. Okay, so polio एक disease होती है जिसमें क्या affect हो जाता है? आपके legs जो हैं वो affect हो जाते हैं. Clear? Next is twins. So twins are the persons who exactly look like each other, born at the same date by the same mother. अभी हमने definition पढ़ी थी twins की. Clear? Discovery. Discovery is something new to be start. Discovery is something new to be start, something new to be discover. कुछ नया मिला, कुछ नया दिखा. That is called discovery. So very simple terms. हम आप सबको भी सारे terms से बहुत familiar हो गए क्योंकि chapter में हमने सारे terms को use किया है. वहीं पे मैंने सारे terms को explain भी किया है. Right? Okay. Next is fun activities. So fun activity में आपको क्या करना है? You may have some similarities, habits with someone in your family or the distant relatives. List them. So हमारे कुछ relatives से या family members से हमारा कुछ ना कुछ habits या similarities होती हैं. So आपकी family में आपकी कुछ similarities होंगी जो match करती होगी आपके parents से या किसी भी relative से. That you have to mention here. Okay, like your similarities आपने लिखी कि eyes, but किससे मैच होती है? So आप यहाँ लिख सकते हो mother. Okay, फिर यहाँ पे लिखते हो, यहाँ पे लिखोगे way of talking. किससे मैच होता है? Father.
ओके, सो आप इस तरह से लिख सकते हो स्माइल किससे मैच होती है, ग्रैंडमदर। ओके, सो इस तरह से आप कुछ भी मैचिंग बता सकते हो कि माई आईज मैच विथ माई मदर, वे ऑफ टॉकिंग मैच विथ माई फादर, स्माइल मैच विथ माई ग्रैंड मदर। सो इस तरह से योर सिमिलैरिटीज एंड हैबिट्स एंड टू होम किससे मैच करती है, दैट यू कैन ऑल्सो राइट। क्लियर? ओके, so this is it. Now I am going to tell you कि if there is any problem in finding any video, any particular topic on magnet brains, तो कैसे आपकी को easy हो जाएगा find out करना, that I am going to tell you। आपको सिर्फ Google पे जाना है और टाइप करना है magnetbrains.com और ये जो डेस्कटॉप है आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हर क्लास के आपको कोर्सेज दिखेंगे फ्रॉम किंडरगार्टन टू दी 12th, आपको सारी क्लासेस के कोर्सेज दिखेंगे। आपको जो भी क्लास का देखना है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको क्लास 3rd देखना है, सो यू हैव टू क्लिक ऑन क्लास 3rd। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये डेस्कटॉप पे ओपन हो जाएगा। आपको हर एक सब्जेक्ट शो होगा जो क्लास 3rd में है, लाइक ईवीएस, इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश वर्कशीट, ईवीएस वर्कशीट, सब कुछ। अब आपको जो भी वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट देखना है, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। फॉर एग्जाम्पल आपको ईवीएस ही देखना है, सो आपको ईवीएस पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप ईवीएस पे क्लिक करोगे सो नेक्स्ट आपका ये डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। सारे चैप्टर्स आपको लाइन से दिखने लगेंगे, जो पूरा सिलेबस है आपकी बुक का वो ओवरव्यू हो जाएगा आपके सामने। सो कोई सा भी चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक का आपको देखना है, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दैट लाइक दिस। ये सारे चैप्टर्स आपको शो हो रहे हैं, आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो और भी सारे चैप्टर्स आपको शो होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको चैप्टर 1 देखना है, यू आर जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट एंड आपका जो वीडियो है वो स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस। क्लियर? So very simple to find out any particular topic, any particular chapter on the magnet brains. Okay, so this is it. We have completed our worksheet of chapter 21 like father like daughter. हमने पूरी worksheet जो है complete करी with lots of exercise and that's like we revise our chapter. So like this only I will complete all the worksheet of your book. Till then you can watch videos on magnet brains because magnet brains provide free education. Thank you.